Hello, Namaste, Sat Shri Akal. Welcome to my channel Astro Learning. In this video, I'm going to explain you fifth house. So, fifth house is a house of pleasure. It is also linked to creativity and children. It's all about what makes you feel good, whether it's orgasm, attention, or the fulfilling work of a creative project. Children, conceiving, miscarriage, relationship with your children, their health, how you raise them, it all comes under the domain of fifth house. So fifth house is related to personal pleasure. The games you like to play, entertainment, recreation, and even your love affair comes under the sphere of this house, fifth house. So the relationship you are indulged in and whether you are successful or not governed by fifth house. Your illegal relationship, illegal children, we get to know about them through fifth house. So fifth house is also about risk of money, your indulgence in speculation and investment, your luck in gambling matters involve the risk of money can be assessed by reading fifth house. So we can call it good luck, fortune also, like lottery, betting, sudden gains, casinos, all this. तो फिफ्थ हाउस जो है वो पर्सनल प्लेजर को दिखाता है. प्लेजर किसी भी तरह का हो सकता है. आप जो प्रोजेक्ट बनाते हो क्रिएटिविटी से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, वैसे अगर देखा जाए तो ये रेफर करता है चिल्ड्रन को. तो किसी भी तरह का प्लेजर जो है वो चाहे वो क्रिएटिविटी, आर्ट से रिलेटेड है या आपका फैमिली से रिलेटेड है, इट कम्स अंडर दिस हाउस, फिफ्थ हाउस. तो फिफ्थ हाउस से ही आपको पता चलता है कि बच्चों के बारे में या फिर लाइक आप कब कंसीव करोगे, या मिसकैरेज के बारे में, बच्चों की हेल्थ को लेके उनको कैसे रेज किया करते हैं पेरेंट्स, ये सब फिफ्थ हाउस से देखा जाता है. फिफ्थ हाउस ये सोशल प्लेजर को नहीं दिखाता, ये पर्सनल प्लेजर को दिखाता है. आप वही काम करते हो जिससे आपको अच्छा फील होता है, आपको अच्छा लगता है, चाहे वो गेम खेलना हो, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो, या फिर लव अफेयर हो. आप जिस रिलेशनशिप में हैं वो सक्सेसफुल है या नहीं है वो फिफ्थ हाउस से देखा जाता है. आपके इलीगल चिल्ड्रन, इलीगल रिलेशनशिप, ये सब इस हाउस में ही आते हैं, गवर्न बाय फिफ्थ हाउस. और जैसे हमें आइडियाज़ आते हैं ना कि हमें लॉटरी खेलनी चाहिए, या फिर हमें पैसा लाइक कैसीनो में इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसे आइडियाज़ जो आते हैं, इससे जो सडन ये जो गेन होते हैं ये फिफ्थ हाउस से ही पता चलता है. तो इसीलिए इसको आप वी कैन से दैट गुड लक एंड फॉर्च्यून डोमेन्स फिफ्थ हाउस. बॉडी पार्ट फिफ्थ हाउस गवर्न स्टमक, अपर एंड मिडल बैक, स्पाइन. Through mundane astrology, we'll get to know about population or birth rate of the country. And it also tells about ambassadors, especially related to entertainment, education, youth and sports. Thank you for watching this video. Please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you.